Hello and welcome to this edition of the Blueprint Exclusive that we're bringing to you from Vijay Chowk right outside the Parliament. Even as inside the Parliament, it's Operation Sindoor that is being debated. After many rounds of din and disruptions, at least 3 rounds that we saw this morning, finally the debate began at 2 p.m. today with the opening statements being made by Defence Minister Rajnath Singh. In a 56-minute long statement, he answered all the questions that had been put forth, or at least were part of the current debate. In fact, responding to the theory that there was some kind of pressure on the government and that the government was acting under influence, he said there's absolutely no question of that. All the operations objectives that were there militarily, politically, all that they set out to do was achieved, and that over 100 terrorists were neutralized. Several of these terror nurseries were completely demolished, also saying that rather than focusing about which jets were destroyed or lost, should look at what really was achieved by the Indian Armed Forces in this entire mission. Listen in. भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उससे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। From the opposition camp, it was the deputy leader of opposition in the Lok Sabha, Gaurav Gogoi, who took on the government as far as Operation Sindoor is concerned. Despite the responses that were given by the defence minister, he stuck to the line that opposition parties had been taking, questioning the government on intelligence failure, questioning about the whereabouts of the Pahalgam terrorists. Listen in. आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। तो मैं जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती। And before the heated debate in Parliament, we had seen a comment of Home Minister P. Chidambaram, former Home Minister P. Chidambaram, in fact, that had gone viral, in which he had clarified, or he had raised a question about how we can go to the conclusion that these terrorists were indeed from Pakistan without enough evidence of the same. We had seen Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju talk about this and appealing to the opposition not to speak the language of Pakistan. Listen in. My request to the opposition members, especially the Congress party, not to do anything to harm India's interests and also not to speak Pakistan's language. And before we go across to the debate, let's quickly get an updates from our colleagues in New Delhi as well as in Srinagar. I'm going to come across to you first, Sahil and Rishabh joining us. Sahil, what's the latest update coming in from what has transpired? Any confirmation yet coming in on the identity of the terrorists who have been gunned down? By when are we expecting a formal statement from the army? Well, as of now, the identification process is still ongoing, and by evening or by tomorrow morning, the army is expected to come out with a statement on the operation. They're going to hold a press conference to put out all the details related to operation. So far,
what we have is that 3 terrorists have been killed. All of them are Pakistani, and what we are picking up from the sources is one is that Sulaiman, who was the Pahalgam attacker, has been in fact eliminated in this anti-terror operation. Now, second part of this is that this still the area where this operation was in fact started and is still going on there. Extensive search are being conducted. The mountain peaks you see on your screen is the Mahadev mountain peak area. That's why the operation was named after, in fact, Mahadev. It's named Operation Mahadev. So this operation was going on for a longer period of time. Ultra Chinese communication sets has been in fact seized from the encounter spot. It's that set which has basically given some intelligence to security forces. These signals were picked up from last 2 to 3 weeks, and those signals were followed. A human intelligence network was also put in place, and in fact that was activated. So with the combination with human intelligence, in fact combining with the technical inputs. Stay with us, Sohail. We'll keep coming back to you for all those updates. Very quickly, getting an update from Rishabh as well. Rishabh, what are your sources in the Army headquarters telling you? By when will we know what is the exact identity of these individuals? Because it has been reported that several of these could be associated with the Pahalgam terror strike. Well, Madhav, what Army headquarters suggests right now that the combing operations, as our colleague from Srinagar was also suggesting, is on. The identification process should be over late this evening, and tomorrow, maybe around 9:30, 10 o'clock, we might have a press conference that was originally scheduled at 5 p.m. this evening, where we'll have complete details of Operation Mahadev and also the identity of the slain terrorists. Now, 3 terrorists have been gunned down by Indian security forces in during Operation Mahadev, and now what we are given to understand that the identification process should be over in an hour or two. Tomorrow early morning, in the first half itself, we'll have a press conference, is what we are given to understand, where we'll know exact identities and their terror activities in the valley. One of them is being identified by sources as Musa Fauji, who is being said as a perpetrator of Pahalgam attack. Remains to be seen what the official narration from Indian Army comes in tomorrow morning. All right. Thanks so much for the quick update, Rishabh, as well as well. Let's quickly now go across to our guests who are joining us live over here. With us is Dr. Anil Bonde, who's a member of parliament from the BJP, is a member of the Raj Sabha. Also joining us is Mayank Sinha, leader of the JDU. Kapil Madan, advocate and political analyst, is with us. Also with us is Vandana Sinha, spokesperson of the Aam Aadmi Party. Let me start with you first, Mr. Dr. Anil Bonde. इस वक्त हमने देखा है किस तरह से डिबेट हुई है. राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट रखी है, लेकिन विपक्ष की ओर से there are still some questions which are emerging. इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जब तक हमें उन टेररिस्ट को पता नहीं चलता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और वो पकड़े नहीं जाते, तब तक कैसे पहलगाम अटैक का कहीं क्लोजर होगा. क्या कहेंगे डॉक्टर अनिल बोंदे? पूरे भारत के नागरिक आज उत्सुक है कि पूरी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा वो सुने, लेकिन पहले 12:15 से चर्चा शुरू होने वाली थी. कांग्रेस वालों ने उसमें भी डिस्टर्ब किया. वो चर्चा शुरू होने के लिए भी 2 बजे तक राह देखनी पड़ी. और सच बात तो ऐसी है कि जो सवाल पूछते हैं कांग्रेस या विपक्ष के लोग, वो हमारी सेनाओं का मनोबल कम करने वाले जैसे रहते हैं. कि वो पूछते हैं कि कितने जेट गिराए, यानी जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस कैसी बोल सकती है. तो यह सवाल पूरे जनता के मन में आता है. पहलगाम का जो अटैक हुआ सबने कंडेम किया. हमारे 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी, हमारी बहनों को उनका सिंदूर पोंछना पड़ा. और लोगों की जो अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इसके ऊपर एक्ट करेंगे जी, और वही उन्होंने किया कि 5 और 6 मई को बराबर 9 जो टेररिस्ट सेंटर थे, जहां से पैदा होते हैं टेररिस्ट, उनको खत्म किया. वही लोगों को लगा कि है दम है बंदे में. मैं सवाल ये कांग्रेस से पूछ रहा हूं. कपिल मदान, 2 questions. The statements coming in from opposition are demoralizing from the forces, and also you saw Kiran Rijiju today speak in the House. He is of course reacting to the interview of the former Home Minister P. Chidambaram, saying that questioning the identity of these terrorists is speaking the language of Pakistan. Your response to these 2 points? Let me say this with a sense of disappointment,
Now what has happened here is that the statements are, making you jittery, but not the facts. Is it not the fact that you had a security intelligence that something was going to happen? If there are some reports, if those reports are true, in fact, Prime Minister was also supposed to visit the state, and he cancelled his visit just because of the fact that we had intelligence that something is going to happen. Now my question is, मैंने अभी हमारे जो काबिल दोस्त यहाँ पे आए हैं उनको सुना, अब वो बोल रहे हैं कि आप ये जो सवाल पूछ रहे हो ये तो आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो और ये सवाल से सारा देश डिसअपॉइंट हो रहा है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जो फैक्ट है, जो वो हुआ है, शर्म की बात तो ये है कि इनको उससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा कि हमारी सिक्योरिटी के पास एक इंटेलिजेंस थी, उस इंटेलिजेंस के बावजूद भी ये इंसिडेंट हो गया, और ये इंसिडेंट होने के बाद भी वो जो 4 दहशतगर्द थे वो इतनी बड़ी घटना को करके वहां से निकल गए। और आप आज देखें, आज was there any special intelligence? Was there any special intelligence in this, Kapil Madan? Madhav, you please, you can fact check me. There are reports, it still exists online, that there was an intelligence because of which Prime Minister's scheduled visit was also cancelled there. Okay. मैम 2 मिनट के लिए was this specific intelligence is a question? क्या जवाब दीजिए? यही आतंकियों के आका जब तक खत्म नहीं करते तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। मुझे पता है कि 26/11 को मुंबई में ट्राइडेंट होटल पे, ओबेरॉय होटल पे, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस वालों ने कभी सोचा नहीं कि ये सब जो टेररिस्ट के आका है जहां पैदा होते हैं उनको खत्म किया जाए। Okay, this is also a relevant question, Kapil Madan. Why is it that after the Mumbai attack we saw no response coming in from the then UPA government? We have at least taken decisive action, something that previous governments have not done. Respond to that. Madhav, let me tell you what the previous governments have not done in the past. They have not politicized military assignments and military operations. There are also reports that suggest you please go and cross-check. In fact, no, Indira Gandhi just hold on. You are saying there is no politicization. I'm responding to that point. Hold on. क्या कभी कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने, जब ये 1971 की वॉर हुई, इसके बाद क्या 1971 की मिलिट्री असाइनमेंट्स और मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे कभी वोट मांगे? आप बताइए। आप मुझे आप बताइए, मुझे नहीं पता और मेरी जानकारी में भी नहीं है और मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा हुआ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बताएं। पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, पूरे भारत के लोगों की आत्मा लगी हुई रहती है। जब 150 लोग वहां पे मारे गए थे, सिर्फ हम कंडेम कर रहे थे, हम डर रहे थे कि वो न्यूक्लियर पावर है, हम अटैक करेंगे तो क्या होगा। लेकिन मोदी जी ने जिस वक्त टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर हुआ, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी ये सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूड। क्विक रिस्पांस, देयर सम ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग। जी की स्टेटमेंट सुन रहा था और राजनाथ जी बोल रहे थे कि ये हमने पहल नहीं करी थी, हमने तो एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था और पाकिस्तान ने एस्केलेट करा और ये वॉर पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने नहीं शुरू करी। अगर एक वॉर पाकिस्तान ने शुरू कर दी तो आपने उसको खत्म क्यों नहीं करा? फिर अगर राजनाथ जी की स्टेटमेंट को मान ले कि उसके बाद सीज फायर का रिक्वेस्ट भी वहीं से आया, तो वॉर भी उन्होंने शुरू करी, उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी पहले टारगेट करे और हमने ही उनकी सीज फायर की जो रिक्वेस्ट थी हमने उसको मान लिया। क्या ये बात there's some breaking news, just one second, there's some breaking news coming in. I just want to play out that there's a reaction coming in from Jay Panda, who has clarified that the Home Minister will be speaking on this issue inside the House tomorrow. Let's take a quick look at what exactly has been stated. Even as we were debating this issue today, some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. All right, Jay Panda has come in. Vandana, you can come in on this. Says that he has just confirmed in Parliament that one of the 3 terrorists who was eliminated in Operation Mahadev today was involved in the Pahalgam terror attack. So that takes out, a lot of the questions that have been asked as far as who these terrorists are, why the government has not been able to nab them. Do you think that question has to an extent been answered if one of these terrorists has indeed been neutralized in this terror attack?
Madhu, first of all, I just want to respond it. We don't have any official statement whether the terrorist is from the same four terrorists. Secondly, how long the BJP is going to disguise himself under the name of the military? First of all, the BJP, in the name of military, they are not showing their own failure. First of all, we do respect to the military. They did their job fabulous. We all do have a great respect for them. But just because of the BJP tying their hand, putting them into Pakistan and saying not to attack and taking them back. And now they are saying that the military is not doing that. It's just they have to stop the politicizing the military first. Secondly, now they are saying that one of the terrorists is being dead. But what is the official statement? There is no statement. Now the Modi ji is saying that we have taken, and our learned friend is there. He is also saying that we did a fabulous job by attacking by Operation Sindoor. But why this ceasefire was announced in the entire his announcement, our defense minister not utter a single word in the parliament. Why the ceasefire was announced by US President Donald Trump? Why it was not a single word was from the, Narendra Modi? And why it's a 25 times it was claimed by the US President. It was a result of the trade deal. Okay. So why Narendra Modi has not retaliated to it? Why we all have to left unanswered when we all have a firm, we all have supported Narendra Modi for the Operation Sindoor. Let me put that question. Mayank Sinha, you want to respond to that? Many questions arising out of Trump's repeated assertions. Why no clarification from the government? Was there intervention? Actually, the opposition's questioning each and every time regarding each and every operations. But Operation Sindoor is one of the most successful operation in the India. In the first time, our delegates sent to the abroad regarding for the terrorism, and they describe what happened. पाकिस्तान ने कैसे क्या किया हमारे साथ. तो द डेलीगेट्स आपको जो भेजे गए उन्होंने सारा कुछ एलोबरेट किया. सेकेंड थिंग इज दैट कि आप यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से लेकर 2014 तक जितने भी अटैक हुए आपने कोई सबूत मांगा क्या? आपने कोई सबूत नहीं मांगा अपनी सरकार से. बट जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, इतना हेवी एक्शन लिया जाता है, तो इनको सबूत चाहिए. क्यों सबूत चाहिए? क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं. इनका मंशा यही है कि पाकिस्तान की भाषा ये लोग बोल रहे हैं. इनको अपने आर्म फोर्सेस पर भरोसा नहीं है. देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है. देश के संविधान पर भरोसा नहीं है. इनको क्या भरोसा है कि कितना जेट गिर गया? पाकिस्तान ने पूछ दिया तो इनको ही पूछना है. इनको ये नहीं पता. इनको ये कहना चाहिए कि आर्म फोर्स ने जो कार्रवाई की वो बहुत ही काबिलियत के परे है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. इंटेलिजेंस का फेल्यूर 1950 से लेकर 2014 तक आपने क्यों नहीं पूछा अपनी सरकार से? उस समय तो आपकी सरकार थी. इंदिरा गांधी जी लेडी प्राइम मिनिस्टर कही जाती थी. आप उस समय कितने घटना हुए? मुंबई अटैक हुआ, आपने उस समय नहीं पूछा. आप कहां से लोग आए, कहां गए, पता नहीं चला. I want Vandana to respond to that. Quick response from me, Vandana, before you go across to others. Yeah. Birds of the feather flocks together. What Congress, what BJP? You are just hiding your failure into the arm of military. We are not asking about the failure of military, sir. We are asking from Narendra Modi. But the people of India support to the NDA government led Narendra Modi, and you are outside. Delhi will decide already. आप बाहर चले गए हो दिल्ली से. आपकी इसी करनी से दिल्ली में आपको बाहर कर दिया गया. There is some more breaking news coming in amidst the Operation Sindoor debate. Once again, Mayank, amidst the debate, there is a detail coming in. The discussion in Lok Sabha has been extended till midnight. So that's the latest update coming in as far as Operation Sindoor is concerned. The discussion in Lok Sabha has now been extended till midnight. Let me quickly, in fact, bring in Mr. Bonde back on this. Mr. Bonde, क्या जवाब देंगे कि कहीं ना कहीं, their argument is that one, when you see the Trump statements, there is no clarification coming in, and that their allegation is that the government is hiding behind the achievements of the army. क्या जवाब देंगे आप? देखिए, विपक्ष की फितरत ऐसी है कि वो ट्रम्प के ऊपर भरोसा रखेंगे, वो मुनीर के ऊपर भरोसा रखेंगे, लेकिन नरेंद्र जी मोदी और अपने मिलिट्री के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे. यानी एक भी सैनिक हमारा हताहत हुआ नहीं, उसके लिए अभिनंदन नहीं करेंगे, लेकिन पूछेंगे कि कितने जेट गिराए गए.
वहाँ पे उनके असद मजदूर जब बोलता है कि मेरे बच्चे मर गए, उसके ऊपर तो कम से कम वो असद मजदूर के ऊपर भरोसा रखो। लेकिन इनका कैसा है कि बाटला हाउस के टेररिस्ट मारे गए तो इनके आंखों में आंसू आएंगे, आप बताइए सर, इनके आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन हमारा मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी सब मिला के ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो उसके ऊपर उनको अभिमान नहीं होता है कि जिसमें हमारा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम युद्ध नहीं कर रहे थे, हम तो टेररिस्ट एलिमिनेशन कर रहे थे। यह समझ में आ रहा है। Okay. We have Mr. Bikash Ranjan also joining us, Member of Parliament. So Bikash Ranjan, how do you respond to this? We have been eliminating terrorists. We have been more effective, says the BJP. Our approach has been very different from past governments, and that is why, there should be no politics over this. The nation should stand as one, is what the Defence Minister has also appealed in the House. How would you respond to them? See, there is no doubt about that. The nation stood one to combat this terrorism. When the all-party meeting was convened, all the parties have supported the government if the government could take an appropriate measure to combat terrorism. And on behalf of my party, I had made it clear that don't go for Zingoism. Zingoism doesn't pay anything, particularly considering the cultural history and heritage of our country. And secondly, immediately after the Pahalgaon incident, the BJP went out against a particular community, campaigning against them. Instead of uniting the people, they are trying to divide the people. But the issue is not really in Pahalgaon, which is an isolated one. What had happened to Pulwama? What is the outcome of this? The Pulwama had a similar incident. Even today, we do not know how did it happen, who is responsible, why it could not be prevented. And then again, Pahalgaon comes. What is the defense of the government? First, we have to consider why could you not protect our citizens who have been there as a tourist to visit? No action has been taken by the government after Pulwama or Pahalgam, you are saying? Nothing. After Pulwama, we don't... responded to Pakistan with these surgical strikes. Responding to Pakistan is no answer. You have to clarify how could this happen and who are responsible. Unless we can make our defects properly remedied, you can't घुस कर ठोकेंगे ये पॉलिसी से ही 2014 से पूरे भारत में जो मुंबई में ब्लास्ट होते थे, दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, रेलवे में ब्लास्ट होते थे, बेंगलोर में ब्लास्ट होते थे, वो ब्लास्ट कहाँ हो रहे? यानी पूरा भारत जो भयग्रस्त रहता था वो कहाँ हो रहा? यानी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो जम्मू कश्मीर तक सीमित हुआ और वो पूरा खत्म करने के लिए, क्योंकि ये मरने वाले की आखिरी फड़फड़ होती है, वैसा टेररिस्ट का the kind of terror attacks happening in the UP are not happening now. That's the direct response. Very bad politics. That when something has happened, you want to take shelter to the other incident which had happened. We go ahead, we do not go back. But this government, I find, always want to take the shelter of what had happened earlier. We have advanced a lot. Now, we have to answer, how could the Pulwama happen? No answer has yet come. Then similar thing, how could the Pahalgaon happen? What is the lapses? You first take care of your own lapses. First take care of our own weakness. Then, but the point is Pakistan has been sending terrorists across the border for 40 years. Yes. This is a government that says that the terrorists are coming, and the point is that we are not going to tolerate this anymore. That is the government's position. All boys. He's telling big words, we are not going to tolerate. But what effective steps have you taken? Is it counter? मयंक सिन्हा जी जवाब दीजिए. ये बिग वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये इनका आरोप है. जवाब दीजिए. ऑलरेडी इतने एक्शंस हो चुके हैं, विपक्ष को सिर्फ जो पाकिस्तान बोलता है वही एक्शन दिखता है. हमारे ऑलरेडी जो विदेश सचिव थे उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया था कि कोई यूएस का मीडिएशन नहीं था, हम लोगों को कोई दबाव नहीं था यूएस की तरफ से. लेकिन अब इनको फॉरेन सेक्रेटरी पर विश्वास नहीं है. इनको कोई चीज चाहिए तो प्रधानमंत्री जी दें. अरे प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी थोड़ा ना है कि बस इटली जाना है, इंडिया आना है, पार्लियामेंट में थोड़ा दिन जाना है, फिर घर चले जाना है, फिर इटली चले जाना है. प्रधानमंत्री जी के पास बहुत सारा काम है. वो देश को पूरे तरीके से देख रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं. और टेररिज्म सुनिए मैडम, जब आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, आप भी थोड़ा सा सुनने का क्षमता रखिए. आप सुनिए. टेररिज्म को खत्म करने के लिए इतना बड़ा डेलीगेशन उन्होंने भेजा, जितने डेलीगेशन आए सबने प्रेज किया कि हम लोग गए अपनी बातों को रखें.
तो आप अपने ही डेलीगेशन, अपनी ही पार्टी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप ही के लोग गए थे ना, शिवसेना, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के लोग गए थे। तो आपके अपने लोगों पे फिर विश्वास नहीं है तो देश पर क्या विश्वास होगा आपको? सारी पार्टी, सारे दलों के लोग गए थे कि आपको अपने एमपीज पे भी विश्वास नहीं है। दैट इज दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले आप उसका जवाब दीजिए कि जब अटैक हुआ पहलगाम में, मोदी जी रैली में क्या कर रहे थे? क्या उन 26 लोगों की मौत की जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं थी? क्या मोदी जी को वहां नहीं होना चाहिए? क्या उनको चुनावी रैली से बताना चाहिए था? उन्होंने सीज फायर मोदी जी ने अनाउंस क्यों नहीं किया? क्या हम यूएस के डोनाल्ड ट्रंप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बताएंगे? क्यों उन्होंने इसको चीज को कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया? क्या कनेक्शन बताने आप? मोदी जी को कहाँ होना चाहिए था? मोदी जी ने बिहार की रैली में जाके इस चीज को एड्रेस किया। मोदी जी ने इंडिया को एड्रेस क्यों नहीं किया पहलगाम से? क्यों नहीं? उन 26 लोगों जिनकी मौत हुई है, उनके लोगों से क्यों नहीं? का जननी है, इसीलिए लेट्स गो वन बाय वन। हाँ, अनिल जी, आई वांट अनिल जी टू रिस्पॉन्ड। मोदी जी ने मधुबनी में पंचायत राज के अधिवेशन में इंग्लिश में भाषण देकर उसी वक्त बताया कि हम घुसकर उनको ठोकेंगे, और वही क्लियर हो गया कि 26 जनों का जो सिंदूर पोंछा गया है उसका पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद में कंटिन्यूअस उन्होंने मीटिंग ली, और 6 और 7 के मिडनाइट को जो हुआ आप सबने देखा है कि 9 टेररिस्ट सेंटर्स पूरे ध्वस्त हो गए। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने उनके एयर बेसेस तोड़े, और जब वो घुटने पे आ गए तब हमने सीज फायर इसलिए किया कि we're going to take a quick break. We're coming back to this discussion. Once again, I'm going to just request all of you to calm down for just a few moments. We're going to continue this discussion in just a few moments. For the moment, we're slipping into a very quick break.